कहते हैं गंगा तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा दर्शन से ही मुक्ति का बोध होता है। और बोट टू संगम पे हम आपको संगम का दर्शन कराने वाले। अगर आप यहाँ पर आ चुके हैं तब तो आप बहुत लकी हैं, अगर नहीं आ पाए तो निराश होने की कोई बात नहीं। हम इस सीरीज़ भारत के चार्जर कुंभ और KDM में आपको कराने जा रहे हैं बोट टू संगम और संगम दर्शन। आज है माघी पूर्णिमा। पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक कल्पवास का संकल्प पूरा होता है और आज की डुबकी कल्पवास पूर्ण करेगी और कल्पवासी आज से निकलना शुरू कर देंगे। यह है दिव्य भव्य और आस्था का महाकुंभ, जहां पर लोग डुबकी लगा रहे हैं। अभी तक सरकारी आंकड़ों की माने तो 46 करोड़ से भी ज़्यादा श्रद्धालु इस आस्था के संगम में डुबकी लगाकर वापस जा चुके और यह आंकड़ा शिवरात्रि तक कितना पहुँचेगा ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अब जो बारी है महाशिवरात्रि की, तो प्रयाग की पावन धरा पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा है और ये उत्साह और उमंग में डूबे श्रद्धालु, जिनका एक ही उद्देश्य है फिलहाल कि माँ गंगा के तट पर माँ गंगा में डुबकी लगाना है और माँ गंगा से अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु कामना करना है। तो ये जो धरा है ये बहुत ही पावन है और यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही अमेजिंग है। इसको एक्सपीरियंस करने के लिए आपको यहाँ पर विजिट करना चाहिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। आज हम निकले हैं बोट टू संगम पर और बोट राइड कर रहे हैं और ये एक्सपीरियंस आपको प्रयागराज आने के बाद ज़रूर करना चाहिए। हमारे साथ एक पूरा परिवार है, उनसे भी बात करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसे है। महाराष्ट्र से चलकर आए हैं, एक एक करके बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि एक्सपीरियंस कैसा है बोट टू संगम का। हम लोग बहुत ही एक्साइटेड थे महाकुंभ में आने के लिए, क्योंकि 144 साल के बाद हमें ये मौका मिला है और हम लोग एकदम लकी समझ रहे हैं खुद को कि ये मौका हम पीढ़ी को मिला है और ये पौष पूर्णिमा का स्नान करने को मिला है। इसके लिए भी हम बहुत खुद को सौभाग्यवाली समझते हैं। सर, मेरा नाम जवनिका धर्मेश मुनि है। मैं महाराष्ट्र मुंबई माटुंगा से आई हुई हूँ और हमें यहाँ पे आने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए, पर जब भी माँ गंगा का बुलावा आता है तभी हम लोग यहाँ कुंभ में आ सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जो आए हैं, जो स्नान करके गए हैं वो बहुत नसीब वाले हैं और जो नहीं आ पाए हैं वो भी ज़रूर आएंगे। अब जो वो भी आस रखे माँ गंगा ज़रूर दोबारा उनको बुलाएगी स्नान करने के लिए। आज माघी पूर्णिमा के दिन हमको ये शाही स्नान का मौका मिला है, तो हम माँ गंगे के देव के बहुत आभारी रहेंगे कि हमको ये मौका मिला है कि जो महाकुंभ 144 साल के बाद जो महाकुंभ आया है तो हम उसका हिस्सा बन पाए। जो हमारी आगे की पीढ़ी ने नहीं देखा, ना ही हमारी आगे वाली पीढ़ी देखने वाले हैं, पीछे वाली पीढ़ी देखने वाली है। हमें वो देखने का मौका मिला तो हम अपने आप को बहुत भाग्यवान समझते हैं कि हमें ये मौका मिला और गंगा मैया ने हमें बुलाया। थैंक यू। हर हर महादेव। छोड़ के सारे काम काज आ गए हम प्रयागराज, छोड़ के सारे काम काज आ गए प्रयागराज। मैं मुंबई से आया हूँ, हितेश सोनी मेरा नाम है और पूनम का ये शाही स्नान का मौका मिला, उसके लिए भगवान का भी शुक्रिया और ये बोट वाले का भी शुक्रिया। अभी आगे हमारा स्नान होगा और ये हमारा मित्र है। 144 साल बाद ये जो कुंभ आया है, हम 44 साल से साथ है, छोटे से तब से साथ है और ये कुंभ में भी साथ में, कांड में भी साथ में थे और कुंभ में भी साथ में है। मेरा नाम धर्मेश मुनि है, मैं मुंबई से आया हुआ हूँ। हम लोग यह संगम आने के लिए हम लोगों ने बोट टिकट का ये सब करने के बाद हम लोग गंगा मैया का कृपा से हमको यहाँ से आने मिला है। माघी पूर्णिमा है तो आज हमको माघी पूर्णिमा के दिन संगम का हमको शाही स्नान करने के मिलेगा। हम बहुत नसीब वाले हैं क्योंकि ये 144 साल में एक बार आता है। मतलब हमारी जो पीढ़ी है हम लोग बहुत नसीब वाले कि हमको ये शाही स्नान करने के लिए हमको ये मौका मिला है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वसुधैव कुटुंबकम की नगरी, जहाँ पर देश विदेश के कोने कोने से लोग आए हैं, सैलानी आते हैं और ये हमारे विदेशी मेहमान जो सबसे पहले संगम की इस धरती पर पहुँचते हैं और आसपास के लोग इनसे मिलने, इन्हें देखने और अपना समय व्यतीत करने इनके साथ आते हैं। तो ये नज़ारा देखेंगे, नज़ारे अद्भुत हैं और ये एक्सपीरियंस बोट टू संगम का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है कि आप इन साइबेरियन पक्षियों के साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये जो कलकल और ये इनकी जो आवाज़ें हैं आपको बहुत पीस देती हैं, सुकून देती हैं। तो आप जब भी कभी आइए बोट टू संगम ज़रूर ट्राई करिए। This is my 6th
visit to the Triveni Sangam this Mahakumbh Mela. I cannot believe how lucky I have been. Today is Maghi Purnima, which is one of the most powerful and auspicious bathing days of the entire century. And that's because Surya is entering into Kumbh today. So Kumbh Sankranti is happening today on the same day as Maghi Purnima. Now the tradition here at Prayag has always been Maghe Prayag. When it's Magh, you come to Prayag. The tradition has always been Maghe Prayage. When it is Magh, you come to Prayag. And that's what we've done. And that tradition does not just extend to the Mahakumbh Melas or even the Ardkumbh Melas. Every year there is a Maghi Mela here at the Triveni Sangam, stretching back for thousands of years, which means I believe that over 1 billion people have visited this Sangam over the millennia. If you think hundreds of thousands a year, if you think hundreds of thousands a year, rising to millions a year, in some years tens of millions, and this year hundreds of millions. Add it all up, and this is almost certainly the most visited place on earth. Now, what happens here? It is a Tirtha. In fact, it's the Tirthraj, the king of all of the Tirthas. Tirthas are places where we cross over. We cross over from ignorance to wisdom. We cross over from one side of a river to the other. It is where the Tirthanka Rishabh himself, the first Tirthanka of the Jains, meditated under Akshayavat. What is Akshayavat? Akshayavat is the everlasting, eternal banyan tree that forever lives and forever gives fruit. And that tree is right here at the Sangam, inside what is now the fort. You can visit it, or what remains of it, in Patal Puri, which is an underground subterranean mandir where the roots and the trunk of Akshayavat can be seen. Next to holy trees, sacred trees, in the tradition, and I'm talking about several thousand years ago, there would be a pillar, a stamba or a skamba. And the pillar here is known as Brahma Yupa. This is the sacrificial pillar or the pillar of offering of Brahma himself, Brahma the creator. There is a tradition that Brahma himself created the universe at this space. There is a tradition that Brahma himself, through a yagya, created the universe here. That Bur, Bhava, Swaha separated here. That earth, atmosphere, and the skies, the heavens, separated right here. And that pillar is what represents the axis mundi, the center of the world, which extends from deep below us, through our world of the earth, into the skies, right up to the heavens themselves. That's here at the Sangam. Then we have the confluence of the rivers themselves. Ma Ganga, Ma Yamuna, and Ma Saraswati. Ma Ganga has moved over at least 10,000 years from the west to the east, washing the banks of the southern shore of modern-day Arail with its beautiful washing the banks of modern-day Arail with her beautiful waters, rich with the minerals and nutrients and bacteriophages coming off the Himalayas hundreds of miles, hundreds of kilometers to the north of here. Now Ma Ganga joins here with Ma Yamuna. Yamuna's waters also begin up in the Himalayas, of course in Yamunotri, before flowing down and joining right here at the Sangam. The waters of Ma Ganga flow much faster here than those of Ma Yamuna. That's because there is a bund, an embankment, built by Akbar to the north of the fort, to the north of Daraganj. So the river Ma Ganga actually now flows to the east of where it once did. It flows down here at a speed faster than it does between here and Mirzapur, which is 50 to 100 kilometers to the east of here. So it comes down really at quite a pace between Daraganj and Junsi. When it comes down, you see that the river seems to go backwards up Yamuna. That is the confluence itself.
This is what Tulsidas described in the 16th century as being like the beautiful cows grazing on the dark green grass. And those lines of poetry are describing the white waters of Ma Ganga at the confluence reaching into the waters of Ma Yamuna, which are of a darker color. I've been able to take the snan right there at that Sangam 5 times already. Today is the 6th time. Incredible blessing, incredible opportunity. And when we think of this is a place that is astronomically at the center of a yog, a conjunction of Surya, of Brihaspati, of Chandra, and even this year of Shani. Shani is in Kumbh, being joined by Surya. So we're seeing the sun and Shani in the same constellation from today. And we also, same Rashi, and we have Purnima rising at the same time. So sunset today will coincide with moonrise. And it has never happened before that Kumbh Sankranti and Maghi Purna have happened on the same day at a Mahakumbh Mela. Incredibly auspicious, incredibly fortunate to be here. आसपास देखेंगे कि बहुत सारी नावें चल रही हैं, उस पर श्रद्धालु बैठे हुए हैं, सैलानी बैठे हुए हैं, और ये जो खूबसूरत नज़ारा है आप अपनी आंखों में फ़ोन पर कैद करिए, क्योंकि ये है दिव्य भव्य कुंभ के साथ साथ डिजिटल महाकुंभ भी।